आशुतोष एंड आमिर बोथ जॉइनिंग अस लाइव हियर ऑन द ब्रॉडकास्ट। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया कि अर्जेंट लिस्टिंग नहीं होगी। दैट डजंट लीव विद मच ऑफ एन ऑप्शन विद द मस्जिद पैनल नाउ, क्योंकि कल से सर्वे शुरू होगा। बिल्कुल, अब जो मस्जिद कमेटी है उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इतने सारे हथकंडे जो थे वो अपना लिए, चाहे कानूनी तौर पे हो या फिर दूसरी तरह का भी हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि देखिए हम इस पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते, लिहाजा अब जो सर्वे का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी ये कहा कि कल शनिवार को अपने तय समय पर, मतलब 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो सर्वे का काम है वो शुरू होगा। हालांकि जो आज का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा की जा रही है और इस वक्त हम गेट नंबर 4 के पास है और इसी गेट नंबर 4 से जो नमाजी हैं वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की आज सिक्योरिटी है। यहाँ पर सीआरपीएफ के साथ साथ जो अंदर सीआरपीएफ है, तो बाहरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिविल पुलिस के जो जवान हैं वो अलर्ट मोड में है। इसके साथ साथ जो नमाजी हैं उन्हें कड़ी चेकिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, नमाजी भी हैं। ये बताइए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, अब आपको क्या लगता है? अभी कोई कमेंट नहीं, अभी नमाज का समय में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई कमेंट भी नहीं देना है यार, मेरे भाई भी नहीं कहना है। हाँ बताइए। कुछ भी नहीं कहना है। देखिए यहाँ पर जो नमाजी हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो सर्वे का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। कल सुबह 8 बजे जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद के अंदर दाखिल होगी और इसके बाद जो सर्वे का काम है शुरू किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सबसे पहले जो सर्वे की जो टीम है वो उस तहखाने के अंदर दाखिल होगी, जिसे लेकर काफी दिनों तक हो हल्ला मच रहा था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उसी तहखाने के अंदर आदि विश्वेश्वर का लिंग है। इसके साथ साथ उसकी पश्चिमी दीवारों की तरफ अगर बात करें तो श्रृंगार मंडप है, श्रृंगार गौरी का मंडप है, जिसे प्रतिदिन जहां पर दर्शन की इजाजत को लेकर ये पूरा मामला जो चल रहा है वो याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन हमने देखा था कि जब पिछली बार सर्वे जब स्टार्ट हुआ था यानी 6 तारीख को, तो किस तरीके से बनारस की सड़कों पर मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो उतर आए थे। और आपको बता दें कि मस्जिद यहाँ से अभी वहाँ पे सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर दी गई है। आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। आमिर इज ऑल्सो जॉइनिंग अस। Amir, twice the survey team has been halted as they arrived at the mosque for the survey. Now, even if they've approached the Supreme Court, there's not going to be a stay because the court has very clearly said that the survey will continue. Well, that's right. In fact, not just over the last 1 month or so. In fact, 30 years plus, there have been at least 2 times when the court had ordered a survey and videography of the disputed premises here at the Gyanvapi, but perhaps the administration, the then governments could not gather enough courage to allow for a complete survey of the disputed site, which is why it was recently prayed again before the Varanasi court that a survey and videography of the entire premises should be allowed. And over the last 3.5 to 4 weeks, we've been witness how the mosque side, the mosque committee, as well as the people from the Muslim community have created hurdles in the survey from happening here. Now, after yesterday's hearing and the court order, it is quite evident that the survey will actually take place tomorrow, which is the 14th, then 15th and 16th, because 17th of May is the time till when the survey has to be completed, the videography has to be completed. And this time around, we do believe that armed with the court's order and the stringent observations that the court has made, this time around the police and administration will also ensure that they have enough backing in terms of forces and whatever means they use to enter the premises and get the videography done. Like Ashutosh was telling you, I'm right outside gate number 4, which leads to the Gyanvapi Mosque, and there are a large number of namazis who've turned up for the Friday Jummah prayers, but most of them are not speaking to the media. They are not opening up. Quite obviously, this is something which has spread by word of mouth that this is some kind of a silent protest that they want to do, that they want to put forward in front of the court as well as the people through media, that they are not happy with the court's order and that they do not want the survey to happen. But one thing is for sure, that this time around the court has not minced its words. There is no ambiguity, so to say, in the court order, like the mosque committee had cited earlier, and therefore this time around is also talking about the current
circumstances that prevail right at the site where tomorrow onwards the survey will be held, will be conducted. Now we are also hearing from the DM side because the survey is to begin from 8 a.m. tomorrow onwards and the report has to be submitted in court before the 17th itself. So the survey will begin tomorrow. That is being confirmed by the Varanasi DM. Listen in. कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। Coming in after Gyanvapi, Mathura survey is now being sought. A plea to appoint court commissioner. Remember, a 4-month deadline to hear cases was also set yesterday. So the Allahabad High Court has directed a lower court in Mathura to decide within 4 months on the two applications, and now here as well a survey being sought. Amir, the details please, because now they are also asking, as far as this particular panel is concerned, that there should be an appointment of an advocate commissioner and a survey should be conducted in a similar manner. What's happening there in Kashi? Well, Abita, this is going forward from yesterday when one of the petitioners in the case, remember there are about 10 petitions that are pending on the Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah case from Mathura in the local court there. And one of the petitioners from among the 10 of them, Manish Yadav, had actually appealed before the Allahabad High Court that all of these cases pertaining to Krishna Janmabhoomi should actually be expedited, that they should be fast-tracked because they've been pending for a long time and there hardly has been any development in the court front. So the High Court yesterday had ruled that, had actually ruled and given a directive to the local court in Mathura to ensure that all cases pertaining to Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah should be heard and disposed of within the next 4 months. So perhaps enthused with the order of the Allahabad High Court, Manish Yadav, the petitioner in question, has now approached the senior division civil judge and put forward his application there that a videography and survey on the same lines of which is happening in Varanasi in the Gyanvapi case should actually be allowed within the Shahi Idgah itself. So that will bring both of these very contentious and long pending cases on the same level as far as the judicial proceedings are concerned, and that will be very interesting to see in the coming days, because today is the day when the application has been filed. We believe that perhaps within a few days there will be a judgment or order perhaps to that effect, wherein either this request, this petition will be turned down, or this will actually see the light of the day in terms of order. Amir, in thank you for joining us with those details. Like you've been telling us, so there's been a 4-month deadline that has been put in place as well. So it's not going to be a long drawn process. There is going to be a deadline to it. Thank you for joining us with those details.